Good evening, viewers. You're watching Covid Dispatch. I'm Preeti Choudhry. We roll this edition of our Covid Dispatch from the rural belt of Punjab. We're, to be precise, in the Malwa region, in the Mansar district, which is south of Punjab. This is an area which has seen a massive spike, a massive surge in COVID cases. The highest case fatality rate in Punjab comes from right here, the rural belt. 60% are the cases across Punjab that the rural belt is contributing. It's huge. It's also a belt, viewers, also a belt where most villages here, strong supporters of the farmers' movement. Nearly each household that we went to has sent somebody from their house to protest at the borders, join the farmers' movement, making one thing quite clear: whether it be the Kumbh, whether it be the elections, whether it be a protest or a movement, COVID spares no one. And, I'm sitting here, and just for a brief while, it's wonderful. There's a tube bull right here. There are these beautiful expanse of, fields, beautiful. There's the sun setting at my back. It's stunning. Only if it wasn't in the backdrop or the narrative of so many deaths, so much sickness. Punjab is reeling under a monstrous COVID surge with the highest COVID case fatality rate in the country. 60% of its COVID cases are now in its rural belt. The virus is now in the Pind, the village. And it's the Malwa region which is most affected. South Punjab, the villages that have been the backbone of the farmers' movement. दिल्ली 15 दिन आप सरदार जी मैं भी 15 दिन लगे 15 दिन लगा के आप सरदार जी आप नहीं गए कितने 2.5 महीने लगा के आए 2.5 महीने लगा के आप जी 2.5 महीने आप भी 2.5 महीने 2.5 महीने आप भी लगा इकट्ठे थे आप दोनों इकट्ठे थे कटरा ले जा कितना टाइम लगा के आए जी महीने लगा के आए 2.5 महीने हां सिर पर नहीं दुखा था महीने चौथे कोई ना और आके दुखा कोई भी आप सरदार जी नहीं गए यहाँ पर जितने भी लोग जो गए हैं जी अभी पिछले 2-3 महीने से कोई नहीं गया ना गया है कि नहीं गया कितने दिन से गांव से कोई नहीं गया 2 महीने हो गए जो गया नहीं कोई 2 महीने नहीं गया तो जो कह रहे हैं कि यहाँ से क्योंकि दिल्ली से आया है वो गलत है कि सही है नहीं दिल्ली को नहीं आया दिल्ली कोई नहीं आया कितने सरदार जी कितने महीने से यहाँ से कोई दिल्ली नहीं गया 2 महीने हो गए जी ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਭਲਿਆ These men are from the Mansar district, from its tiny village Makha. It has only 1,000 voters. Yet, this village has seen 11 deaths in 24 days. 3 in just 1 day. All either positive or COVID symptomatic. This village is staunchly supporting the Kisan Kranti. It is difficult to spot a house here that does not show allegiance to the farmers' movement. इस बार 11 मौतें हुई हैं गांव में हाँ जी 11 हुई हैं जी हाँ कितने दिनों में ये 1 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ जी 1 महीने में 11 मौतें हुई हाँ जी हाँ जी हाँ जी और परसों आप कह रहे थे कि 3 मौतें एक दिन में हाँ जी ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਈ ਆ 2 ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਟੀਨ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ When I asked the Sarpanch if of the 11 were there any who had gone to the border to protest, he said from the ones who went to the border, 2 died much earlier in April. The rest never went. ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ कोई नहीं गया यहाँ पे दिल्ली ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਦਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਿੰਡ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਈਏ However, the deceased includes 2 office bearers of the Bharatiya Kisan Union, Dakuanda. While one died of COVID on the 28th of April, the other one
on May 1st. The second person had COVID symptoms but never tested positive. The small village is in mourning. Too many have died, too many are sick, and there is little or no medical help. And then the financial drain. और फिर कोई प्रबंध था कि जो मैनेज कर पाए, उनको क्या सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम हुई थी? घर से ज़्यादा तो पहला तो बुखार होया जी, एक दिन पहला बुखार हो के उस बाद असीं मानसा दिखा लिया। मानसा डॉक्टर विरक दे कहंदे भी ऑक्सीजन की कमी पऊगी, इहनूं कदों भी पै सकदी है, भी हूँ तो मेडिसिन नाल ठीक हो जूगे। ते असीं आखिया भी बठिंडे लै जाने जी, उत्थे एडमिट नहीं कीता सानूं इन्हां ने, मानसा किते भी बठिंडे उत्थे भी सिफारश ते किसी डॉक्टर राਹੀਂ बैड लैता जी, नहीं मिला बेड? नहीं बैड नहीं मिलिया। प्राइवेट हॉस्पिटल च सत्यम हार्ट च मिलिया। ते 2-3 दिन तो उन्होंने बिल्कुल ऑक्सीजन भी नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। ऑक्सीजन नहीं लगा? नहीं लाया जी, उस बाद लाया। और उनका कितना था ऑक्सीजन? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ 99 ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗਏ ਆ 99 ਚੱਲੀ ਗਏ, ਫਿਰ 85-86 ਰਿਹਾ। 3 ਦਿਨ ਉਹ ਬਸ ਘਬਰਾਹਟ ਚ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲਗਾਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਕੇ ਵੀ 85-86 ਮਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਸਰ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਡਾਊਨ। ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਥੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ, ਸਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖਰਚਾ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਲਗਭਗ ਖਰਚਾ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। 40,000. Closest hospital is the Mansa Government Hospital 20 kilometers away, and all it hands you is a referral. वहाँ ले गए, वहाँ पे कोई कुछ नहीं था जी? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੈ ਜਾਓ। कितना दूर है फरीदकोट जी? ਫਰੀਦਕੋਟ ਇੱਥੋਂ ਹੈਗਾ ਜੀ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 150 किलोमीटर? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इधर मतलब कुछ यहाँ पर कुछ है नहीं, ना डॉक्टर है, ना वेंटिलेटर है अस्पताल में, कुछ भी नहीं? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। Most go to the local doctor in the village with no resources. The doctor here is crushed. He lost 11 of his people in 24 days. सरदार जी मुझे बताइए, आप कितने टाइम से इधर देख रहे हैं मरीज? मैं 21 साल से जहाँ कर रहा हूँ सर। 21 ईयर से आप देख रहे हैं? हाँ जी। कभी ऐसा टाइम देखा है कैसे लोग नहीं, बीमार मैं पड़े? कभी नहीं देखा ऐसा। कभी नहीं, कभी नहीं। परसों 2 मौतें ने जब शिविर में गए ना, 2 शिविर चल रहे थे ना, बहुत आपको फील होया भी एक छोटे ਜਿਹੇ पिंड में 2 शिविर चल रहे नहीं, पहली बार हुआ है हमारी एज में। 24 घंटे में 3 मौतें हुई? हाँ, 3 मौतें हुई। 2 लगातार शिविर चल रहे थे जी। आपके मन को बहुत खुशी हुआ भी इतने छोटे पिंड में 2 शिविर चल रहे हैं नहीं। अपने आपको ये हुआ भी महामारी पता नहीं कितनी सी हो गई, थोड़े में दिन में 10 मौतें हो गई यहाँ पर एक छोटे पिंड में। कितने है यहाँ की आबादी जी? इसकी आबादी 2000 है जी। 2000? हाँ जी, 2000 की आबादी है जी। और सिर्फ 20-25 दिन में 11 मौतें? हाँ जी, 11 दिन में 20-25 दिन में 11 मौतें होगी यहाँ पर। हाँ जी। आप देख रहे थे काफी सारे उन लोगों को? हाँ जी, पेशेंट को देखता सर मैं ਸੀਆਰਪੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਆਰਪੀ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। There is present fear in this village of Jat 6. Every 10 minutes, someone comes to the doctor to get his oxygen levels measured. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿਮਾਰ। 1 महीने में बहुत बीमार हो रहे हैं? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਗਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗਏ। ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਡਰੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। किस चीज का सबसे ज्यादा डर, किस चीज का है? कोरोना का ही। कोरोना का डर है जी? हाँ जी। The true extent of the COVID tragedy in Punjab is witnessed right here in the Pind, in the villages of Punjab. 60% of the corona cases across the state of Punjab come in from the rural belt. What one can pick up is the deepest sense of despair, the deepest sense of helplessness when they see their own die. It's all clubbed and in contradiction with the deepest sense of pride to be associated with the farmers' movement. Some of them do know that the import of the virus
could very well be from what has gone down in Delhi's borders. But they don't want to admit it. And understandably so. The pride, the Sikh pride, is so much stronger. But there is a pandemic. And that's the conflict. Reporting with camera person Hitesh Kumar, Preeti Choudhry for India Today. Welcome back, viewers. You're watching COVID Dispatch. As we continue to roll out of the state of Punjab, I'm going to keep connecting to my other colleagues who are spread across the country, recording, documenting grief, stories of heartbreak, and also documenting stories of heroism. Some in the hinterland, some in the urban cities where the corona crisis is concerned. This one coming in from Rajasthan's Baroda village in Jaisalmer. My colleague Moshmi is travelling through the rural belt in Rajasthan as I do it in Punjab. And she went through this one village which had the highest COVID cases in Rajasthan. Totally decimated by it. Now the village seems to be rising from the ashes, making sure that there is no repeat. We've been traveling since the past 7 days, 2,000 kilometers from east to the north and now West Rajasthan, in the city of Jaisalmer. The Golden City has often received a lot of attention as far as tourism is concerned. But now battling this pandemic, is the city getting its due? We'll try and find out. Jaisalmer district is vast, spread across more than 38,000 square kilometers. And here it was felt by the locals that the second wave would not impact the rural areas, because that is how it was in the first wave. They realized their mistake when things went out of hand, when nothing could be done. To get the real picture of Jaisalmer district, we've come about 35 kilometers away to one of those villages that has reported the highest number of COVID cases, the highest number of deaths, unofficially 24, officially about 10. Importantly, behind me you see this is no political yatra. This is a Jagrukta rally done by the Nigrani committee or the inspection committee of the village that is spreading awareness. So let's go and find out how this once happy village has turned so deserted. It all started with 14 weddings in a day, spiraling into more than 226 COVID positive cases, leading to 25 deaths and counting. The village woke up to the tragedy of corona, and Baroda is now a containment zone. It's practices like these that have helped check in the COVID cases in villages. These monitoring committees doing patrolling, trying to sensitize the villagers about following the COVID protocols. This when 15 weddings on the 13th of April actually led to a cascading effect of spreading the COVID infection in this village that's reported the highest cases. And here you can see that the head of the core group of the villages that is working on ground zero right here. Maxim ji, ये बताइए क्या जानकारी आप लोग दे रहे हैं? मैडम, कोरोना बड़ोड़ा गांव में एक बहुत बड़ी भयावह स्थिति बन चुकी थी, परंतु वर्तमान में कोरोना के लिए पूर्ण रूप से नियंत्रण है और हम आशा करते हैं कि शीघ्र बड़ोड़ा गांव कोरोना से मुक्त हो जाएगा। क्या आपकी कमेटी है, मॉनिटरिंग कमेटी? हमारे यहाँ पे मैडम एक कोर ग्रुप बना हुआ है और उसके अलावा 6 निगरानी दल बने हुए हैं और हमारे निगरानी दल है वो पूर्ण रूप से हर गांव के गलियों में, हर क्षेत्र में जाकर के लोगों को समझाइश कर रहे हैं और जो लोग पॉजिटिव है, जो लोग इस प्रकार के लक्षणों से ग्रस्त है, उनकी पूर्ण मॉनिटरिंग हो रही है, उनको मेडिकल किट वितरण हो रहे हैं। The village had 6 monitoring groups, medical checkups for the ones who were positive, isolation protocols defined, door-to-door survey. A united effort made a difference. A voice on the loudspeaker alerted villagers of the COVID protocols. Ratan Singh, a teacher, edited and rehashed the announcements daily to ring the alarm bells. हाँ, मैंने तैयार किया, डबिंग मैंने की। कितना समय लगा और क्या-क्या इसमें पॉइंट्स डाले आपने? ऐसे हम ऑडियो बार-बार बदलते हैं। हाँ। जिस तरीके से हमको जरूरत रहती है वैसे बदलते रहते हैं और नए-नए बनाते हैं। नए-नए बनाते हैं। और फिर गांव में सबको सुनाते हैं। सब लोग आपकी आवाज भी पहचानते हैं? बिल्कुल। The villagers had to learn their lesson the hard way, but there were some who immediately took corrective measures.
Mool Singh has finished his nursing course. Readying to be a COVID warrior, he understood the gravity of the situation and called off his own wedding. अफसोस वाली ऐसी कुछ बात नहीं है। मैं खुद एक मेडिकल स्टाफ भी हूँ, मेरे नर्सिंग की हुई है और मैं खुद तो ये इस कोविड काल में लॉकडाउन में शादी कैंसिल कर रहा हूँ और गाँव में कोविड बहुत ज़्यादा है, फैला हुआ है, इस कारण से मैंने शादी पोस्टपोन की है। और आस पड़ोस वालों ने भी, और मैंने फादर साहब से बात की तो फादर साहब ने सोचा इस चीज़ पर बात करके कैंसिल किया और आसपास वालों ने भी कैंसिल किया। वैसे कार्ड मैंने भी छपा दिया, सामने वाली पार्टी उन्होंने भी अपने कार्ड छपा दिए थे, वो कैंसिल कर दिया इस कोरोना की वजह से, क्योंकि चारों तरफ मौतें हो रही थी, गांव में वहां भी हो रही थी, संक्रमित लोग ज्यादा हो रहे थे, जिससे आगे भी संक्रमण बढ़ेगा। ये तो स्वाभाविक है, शादी विवाह होगा उसमें तो आदमी एकत्रित होंगे और उससे तो संक्रमण बढ़ेगा ही, इसी कारण कैंसिल की गई। Who would want to cancel a wedding celebration? Nepal Singh was one of the first in the village to do so. Having faced the brunt of uninterrupted wedding celebrations that added to the spread, this village has learnt its lessons fast and done a course correction. Others would do well to emulate this example. With video journalist Satya Rotre, this is Mosmi Singh in Badoda village, Jaisalmer, with Vimal for India Today. Let's move on now to the state of Karnataka. Frontline workers come in various shapes, sizes, professions. We've seen doctors, we've seen nurses, we've seen journalists, we've also seen policemen. Karnataka has seen a death toll of 45 policemen who have died in the line of duty during the corona crisis. My colleague Nabila Jamal with this report. Assistant Sub-Inspector Mari Macha was a man of integrity. He never missed work in his 33 years of service. On the day he passed away, he was ready in his uniform to leave for duty on the front lines when he collapsed. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಡಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಇದ್ದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಬರೋರು ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮದು ಅವರು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನನಗೆ. Chan Pasha is the father of 41-year-old Yasin, a traffic constable who lost his life to COVID while ensuring people adhered to lockdown norms. His young son's death has not deterred Pasha, himself a retired cop, from continuing his duty as chief of security at the Baptist Hospital. अभी नेक्स्ट 2-3 महीने में उसका प्रमोशन भी होने वाला था। मेरे को हिम्मत देता, तुम परेशानी करो लोगों को, बतवा क्या करेंगे, हालत तो ऐसी अल्लाह ताला दे दिया। अभी हमारे मन से अभी वो दर्द नहीं गया। 48 deaths in just 1 month. The COVID-19 second wave has been unsparing on the police department in Karnataka. The rising toll among police personnel hasn't stopped hundreds of police personnel like Circle Inspector K. Vishwanath from stepping out to do their duty, aware they're exposing themselves to the virus. Past from 1.5 years, he's trying to help the needy people from the day of one till the lockdown starts. Till now, from the first was in Jigni station, that time he had distributed the food kits, medicines. Over 160 police officers have died in Karnataka since coronavirus outbreak last year. In the first phase, as I said, 90,000 force, we got 10,000 positive cases and 102 of them lost their life. That was devastating. Every day, I remember the first death took place on 16th of June
And since then till September, almost every day 1 or 2 policemen were losing their life. The number of deaths within the police department has not deterred the police force from coming forward and committing to their duties. Be it the civil force, the fire brigade, the traffic police, the reserve police, they've all stepped up to rise to the occasion, prioritize people's lives first before their own. Kudos to their efforts. With camera person Pavan Kumar, Nabila Jamal for India Today, Bengaluru. With that, it's a wrap on this edition of COVID Dispatch. We're going to continue to traverse the rural belt of Punjab, bringing you stories through the course of this week. Appreciate you all for joining us, and do stay tuned for all our COVID dispatches, which me and my colleagues bring together from across the country. Thank you for watching. Up next is Rahul Kanwal.